गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एएम यूज माइनॉरिटी कैरेक्टर। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो 7 जज बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के मैटर को जो है वो हेयर करना शुरू कर चुका है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी। वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ इस्लामिक थियोलॉजी भी जो है वो विमेन एजुकेशन जो है वो देने के लिए, ठीक है, मुस्लिम्स को खासकर। तो 1920 में इसको यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला। करंटली एक पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये अलीगढ़ में। और इंडिया में अगर माइनॉरिटीज़ के कंटेक्स्ट में देखें तो कहीं पर भी डिफाइन नहीं है कि माइनॉरिटी क्या होता है। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके आइडेंटिफिकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, बट जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसको माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टेटस मिलेगा। और ये जनरली किया जाता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट के अंदर। मार्च 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि स्टेट्स भी जो है वो अपनी टेरिटरी के अंदर जो है डिसाइड कर सकती हैं कि किसको माइनॉरिटी स्टेटस मिलेगा। जैसे महाराष्ट्र जो है, उन्होंने ज्यूज़ को माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो स्टेट में दिया हुआ है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 ग्रुप्स जो हैं वो नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी आइडेंटिफाई किए हैं: मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज और जैन्स, ठीक है। तो आर्टिकल 29 जो है हमारा प्रोटेक्शन और ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने का उनके पास। आर्टिकल 350A जो है वो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बनाने की बात करता है। अब कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं जो माइनॉरिटी से डील कर रही हैं, जैसे टीएमए पाई फाउंडेशन की जो जजमेंट थी, जिसमें 11 जज बेंच ने कहा कि स्टेट जो है वो यूनिट होगी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी जो है वो डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। सेम यही इनामदार केस में भी कहा गया कि डेमोग्राफी ऑफ स्टेट को जो है वो बेसिस पर ही जो है क्लासिफिकेशन की जाएगी। वही बाल पाटिल के केस में भी कहा गया कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है वो स्टेट के लेवल पर यूनिट डिटर्मिन होगा। अब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? वो कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस जो कि माइनॉरिटी ग्रुप द्वारा बनाए जाते हैं अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्टिकल 30 जो है उनको वो ये राइट देता है कि स्टेट भी जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जब उनको ग्रांट दी जा रही है, तो ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट भी बनाया गया आर्टिकल 30 क्लॉज 1 को एनफोर्स करने के लिए, और एक कमीशन बनाया गया जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है और सिविल कोर्ट की पावर है उनके पास ऑफ कोर्स। और वो जो है ये एजुकेशनल राइट्स जो हैं ये कमीशन इंश्योर करता है, ठीक है। तो अब लीगल डिस्प्यूट है क्या अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कंटेक्स्ट में? तो लीगल डिस्प्यूट 1967 में जो है वो अराइज हुआ जब सुप्रीम कोर्ट 1951 और 1965 में एएमयू एक्ट के अंदर जो चेंजेस किए गए उनको रिव्यू कर रहा था। तो इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि एएमयू एक सेंट्रल एक्ट से तो बनाई गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। 1981 में जो है कि जो मैं जो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो आई थी उससे नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए, तो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ ने 1981 में अमेंडमेंट करी एएमयू एक्ट में और उसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। 2005 में जब 50% सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिज़र्व की गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को ओवरटर्न करके 1981 के जो अमेंडमेंट है उसको नलिफाई कर दिया। 2006 में 8 पिटीशंस फाइल की गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन 2016 में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई उन्होंने बोला कि अब हम इस अपील्स को से दूर हट रहे हैं, हम इसमें पार्टी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। ये जो है हम नहीं चाहते, हम इसका पार्ट नहीं होना चाहते, हम कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक सेकुलर स्टेट नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर जो मैटर है वो 7 जज बेंच को रेफ़र किया हुआ है फरवरी 2019 में, और यही जो है हियरिंग अब शुरू हुई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्टेमिस प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्पेसक्राफ्ट एक प्राइवेट यूएस कंपनी द्वारा फ्लोरिडा में से टेक ऑफ हुआ है। फर्स्ट यूएस स्पेसक्राफ्ट बनेगा मून पर लैंड होने वाला मोर देन 50 ईयर्स में। तो अब इसमें ये भी देखा गया है कि फ्यूल लीक हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये लैंड नहीं हो पाएगा। तो ये फर्स्ट यूएस लैंडर है पिछले 50 साल में जो कि स्पेस में गया है और प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये मिशन जो है फर्स्ट लैंडिंग ऑफ अ प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट जो है वो ट्राई करेगा
मून पर, ठीक है, फरवरी 2023 में, फरवरी 2024 में। तो अब आर्टेमिस प्रोग्राम का ही ये पार्ट है, तो आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है वो देख लेते हैं। तो ये ऑनगोइंग लूनर मिशंस हैं जो नासा चला रहा है। आर्टेमिस 1 जो है वो 2022 में लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस 2 जो है वो एक क्रूड फ्लाइट लेकर जाना चाहता है मून पर, जो आज तक सबसे दूर जो है गए हों, ठीक है, हिस्ट्री में। आर्टेमिस 3 में अपोलो 17 को जो है मिशन 1972 का, उसके बाद जो है अब फर्स्ट लैंडिंग मिशन जो है वो बनाना चाहते हैं नासा, जिसमें एक फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट और फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ कलर को लूनर सरफेस पर जो है वो भेजा जाएगा। आर्टेमिस 4 ऐसे ही है, जिसमें गेटवे ऑर्बिट जो हमने कल ही पढ़ा था वो जो है वो कोर पार्ट उसका इंस्टॉल किया जाएगा। आर्टेमिस 5 में एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल डाला जाएगा गेटवे में, जो कि ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह मून को ऑर्बिट करने वाला स्पेस स्टेशन बनेगा, ठीक है। और एम ये रहेगा कि एक परमानेंट बेस कैंप बने मून पर, एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पर लॉन्गर स्टेज के लिए भी भेजा जा सके, ठीक है। तो ये पेरेग्रीन लैंडर मॉड्यूल जो मिशन का है, और जो वल्कन रॉकेट है जो जिससे लॉन्च किया गया, दोनों ही प्राइवेट कंपनीज, स्पेस कंपनीज द्वारा यूएस में बनाया गया है। और एटलीस्ट 14 प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया है नासा ने इन पेलोड्स को बनाने का, ठीक है। सो स्पेस क्राफ्ट जो है वो लगभग 40 दिन लेगा और अराउंड फरवरी 23 को वहाँ पर लैंड होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ये आपके टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने जो है ग्रीटिंग्स जो है वो एक्सटेंड की हैं प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर। 9 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। एक्चुअली सेलिब्रेट तो इसको 2 साल में एक बार किया जाता है। तो लास्ट ईयर 2023 में सेलिब्रेट हुआ था, तो इसलिए इस बार इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। अभी 2025 में सेलिब्रेट होगा। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे भी इसको हम कहते हैं, फ्लैगशिप इवेंट होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। तो ये बेसिकली कमेमोरेट करता है रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी जी, ठीक है। हर 2 साल में एक बार इसको मनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर ई सी लिमिटेड। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आर ई सी लिमिटेड ने अपना एम्बिशियस प्लान जो है वो अनाउंस किया है, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में भी जो है फाइनेंसिंग देना चाहते हैं 1 लाख करोड़ तक की, रोड्स और हाईवेज़ के कंटेक्स्ट में। तो आर ई सी लिमिटेड वैसे एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, लेकिन ये फाइनेंसिंग दे कर रही है प्रोजेक्ट्स की पावर सेक्टर वैल्यू चेन के अलावा भी, ठीक है। तो ये एक आर बी आई में एन बी एफ सी की तरह रजिस्टर्ड है। 1969 में इसको बनाया गया था। और ये पावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अलावा भी नॉन पावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जैसे कि रोड्स, एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, आईटी कम्युनिकेशन में भी जो है फंडिंग देती है। लॉन्ग टर्म लोन्स और अदर फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स भी देती है स्टेट, सेंटर और प्राइवेट कंपनीज को, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज का जो 11 TM मॉड्यूल 2 है, वो अभी दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तो इसको डेवलप किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ताकि जो है डिसीज़ को इंटरनेशनली क्लासीफाई किया जा सके। तो बेसिकली हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस के हिसाब से, मॉडर्न बायोमेडिसिन के हिसाब से डिसीज़ को डायग्नोस किया जाता है, और उससे ही जो है वो कॉज ऑफ ह्यूमन डिसीज़ और डेथ जो है वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफाई किया जाता है कि पर्सन की डेथ किस वजह से हुई है। उसको जब आइडेंटिफाई करते हैं, कैटेगराइजेशन करनी है, उसके लिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। तो जब आप हेल्थ रिकॉर्डिंग कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स बना रहे हो कि डेथ सर्टिफिकेट इशू करने में, तो जब उसमें आप कॉज ऑफ डेथ लिखोगे तो ऑफ कोर्स वो कौन सी डिसीज़ से हुआ है, उसके लिए ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज इंपॉर्टेंट होती है। तो इंडिया में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर जो है WHO का कोलैबोरेशन सेंटर में के साथ कोलैबोरेट करती है ऑफ कोर्स फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो TM2 मॉड्यूल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बनाया है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डोनर एग्रीमेंट भी साइन किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और कैटेगराइजेशन ऑफ डिसीजेस वो भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रसादम। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कंट्री का फर्स्ट हेल्थी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम उज्जैन में महाकाल टेम्पल के पास खोला है। तो ये फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट है, जो कि प्योर और सेफ लोकल एंड ट्रेडिशनल फूड जो है वो सभी डिवोटीज़ को देंगे, जो कि लगभग 1 से 1.5 लाख डिवोटीज़ महाकालेश्वर टेम्पल में डेली आएंगे, उनको ये खाना दिया जाएगा, ठीक है। तो महाकालेश्वर टेम्पल तो आपको पता है कि उज्जैन में स्थित है, मध्य प्रदेश में, रुद्र सागर लेक के पास।
जो यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है ये दक्षिण मुखी है, मतलब साउथ को फेस कर रहा है। और ये टेम्पल जो है वो 5 लेवल्स में स्प्रेड है। गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर इमेजेस हैं। और ये सर्वोतभद्र स्टाइल में इसका टैंक कंस्ट्रक्ट किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उग्रम। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने एक इंडिजिनस असॉल्ट राइफल जो है उग्रम लॉन्च की है। उग्रम का मीनिंग क्या होता है? फेरोशियस, ठीक है। उग्रम जो है एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस असॉल्ट राइफल है। डीआरडीओ ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर इसको बनाया है जस्ट 100 डेज़ के अंदर ही। तो GSQR के जो कंसिडरेशन थी उसके हिसाब से ही इसको बनाया गया है। 500 मीटर के आसपास इसकी रेंज है। 4 किलो से भी कम इसका जो है वो वेट है। और 20 राउंड मैगजीन है इसके अंदर, जो कि फुल ऑटो मोड में ये चलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने फर्स्ट इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड दृष्टि 10 स्टार लाइनर UAV नेवी के लिए लॉन्च किया है। इसको अदानी डिफेंस और एरोस्पेस ने बनाया है, इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म है, एक तरह से ये एडवांस्ड ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म है। UAV का ऑटोनोमस नेचर है कि ये मिशन इफेक्टिवनेस और पेलोड की कन्फिग्रेशन के हिसाब से ये स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस कर सकता है। और मिनिमल इसमें मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स है। इंक्रीज्ड ऑपरेशनल रेडीनेस रहती है इसकी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ साइट, डेटा लिंक्स, हर तरह के एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी इसमें लगे हैं, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं INS काबरा। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो एक इंडियन वॉरशिप INS काबरा जो है वो कोलंबो पोर्ट पे डॉक हुई है एज पार्ट ऑफ इंडिया और श्रीलंका के डिफेंस टाइज। तो ये एक नेवल वेसल है। अंडमान और निकोबार आर्किपेलागो के नाम पर इसका जो है नाम रखा गया है। कार निकोबार क्लास ऑफ हाई स्पीड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, जो कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने इंडियन नेवी के लिए बनाए हैं। ऑफ कोर्स एंटी पायरेसी रेस्क्यू ऑपरेशंस इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में करने का इसका वन ऑफ द मेन मोटिव्स है, ठीक है। तो ये इंडियन आइलैंड्स के नाम पर इन क्लास ऑफ वेसल्स का नाम रखा गया है। और ये पहले वाटर जेट प्रोपेल्ड वेसल्स हैं इंडियन नेवी के, ओके। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Aligarh Muslim University's minority character. This topic is important for your social issues. So a 7-judge bench of Supreme Court has started hearing the matter pertaining to Aligarh Muslim University's minority character. So it's the university's origin can be traced back to Mohammedan Anglo-Oriental College, which was established by Sir Syed Ahmad Khan in 1875 to help Muslims overcome educational backwardness and to prepare them for government services. So this university not only imparted Western education but also imparted Islamic theology, and also Sir Syed Ahmad Khan advocated for women's education. So in 1920, this institution was conferred the university status, and currently it is a public central university. So currently we do not have any definition or a clear-cut definition of minority in the constitution. So this subject has been left for the identification on the concurrent list. So currently central government decides who gets this minority status in India, and it is done under the National Commission for Minorities Act of 1992. So in March 2022, central government told the Supreme Court that states could decide the minority status of eligible communities within their own territorial jurisdiction also. So currently the center has notified 5 groups as minority communities at the national level: Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Parsis, and Jains. And Jains were the latest one to be added in 2014. So, Article 29, Article 30, and Article 350A, these are the constitutional provisions which deal with rights of minorities. We have different Supreme Court judgments also which are dealing with minorities. So in TMA Pi Foundation case of 11 judge bench, state has been recognized as the unit for determining the linguistic as well as religious minority. The same principle was um, reinforced by Inamdar case and Bal Patil case. So, what is a minority educational institution? So, these are colleges or institutions which are established by a minority group to protect and promote their culture and traditions. Article 30 provides protection to them, and it also prohibits the state from discriminating against these institutions while granting aid. So there are also legal provisions like National Commission for Minority Educational Institutions
has been established under Article 30, Clause 1, which is a quasi-judicial body, which is which has the purpose of discharging its functions under this act. So there are legal disputes over. Now let us see what is the legal dispute over Aligarh Muslim University. So this dispute arose when in 1967 the Supreme Court started reviewing the changes made in the AMU Act AMU Act in 1951 and 1965. At that time, the Supreme Court said that university may have been established in 1920 as per the 1920 Act, but it does not imply that it is a Muslim minority institution. So this triggered nationwide protests from Muslims, but the political authorities yielded to this protest, and an amendment was made in 1981 to explicitly affirm its minority status. But in 2005, another controversy arose when AMU implemented a reservation policy of 50% seats being reserved for Muslims. At that time, Allahabad High Court overturned the reservation and nullified the 1981 Amendment Act, which affirmed the minority status to AMU. So this matter was challenged in Supreme Court in 2006, but in 2016, when the new government came, government informed the Supreme Court that it was withdrawing this appeal, which was filed by the previous government. So as of now, in February 2019, a three-judge bench presided by the then CJI Ranjan Gogoi referred this matter to a seven-judge bench, and now this bench has started hearing on this issue. So the next topic is Artemis program. This topic is important for your science and tech section. So a spacecraft has been developed by a private US company and which took off from Florida recently. And the aim is to of this aircraft is to spacecraft is to become the first US spacecraft to land on the moon in more than 50 years. But recently the news has come that it has found certain fuel leakages in the spacecraft, so there could be some issues when it is before it is bound to land on the moon for a soft landing on February 20th next month. Okay, so if successful, this would be the first US lander in more than 50 years, and it would involve the first landing of a private spacecraft on the moon. So, what is the Artemis program under which all these landings are being made? So, Artemis is a series of ongoing lunar missions run by NASA. Artemis 1 was launched in 2022, which was an uncrewed test flight, orbited and flew beyond the moon. Artemis 2 will be a crewed flight which will be which will go beyond the moon, and it will take humans the farthest they have ever been into the space. Artemis 3 will be the first crew moon landing mission since Apollo 17 in 1972, and it will land the first female astronaut and first astronaut of color on the lunar surface. Similarly, Artemis 4 and 5 will install the Gateway space station, a lunar space station, which will be similar to our international space station, but it will basically orbiting the moon. Okay, and the aim is to establish a permanent base camp on the moon so as to send astronauts and robots for longer stays there. So the Peregrine lander module of the mission as well as the Vulcan rocket which launched this were both built by private space companies, and at least 14 private companies have been contracted by NASA to carry NASA payloads to the moon. Okay, so the spacecraft is set to take about 40 days to reach the moon, and it may make a landing on February 23rd. So the next topic is Pravasi Bharatiya Divas. This topic is important for your social issues. And so the Prime Minister of India has extended greetings on Pravasi Bharatiya Divas. So this year we are not celebrating it because it is celebrated once in 2 years. So just last year in 2023, we celebrated Pravasi Bharatiya Divas in Indore of Madhya Pradesh. So it is a flagship event of Ministry of External Affairs, which is celebrated on January 9th every year to commemorate the return of Mahatma Gandhi. So since 2015, we are celebrating it only once in 2 years. So the next topic is REC Limited. This topic is important for your economy section. So REC Limited has recently announced its ambitious plan to increase its financial sanctioning in the infrastructure space, including for roads and highways,
with about 1 lakh crore rupees in current financial year. So REC Limited is a central public sector undertaking under Ministry of Power to finance projects in the power sector value chain from generation to distribution. It is currently registered with RBI as a non-banking financial company. It was incorporated in 1969. It has expanded its scope not just for the powers and not just to the power infrastructure sector, but also to non-power infrastructure sector like roads and expressways, metro rail, airports, IT communication, etc. It provides long-term loans and other financing products also to state, center, and private companies. So the next topic is international classification of diseases. This topic is important for your social issues. So World Health Organization's international classification of diseases has launched a module in New Delhi recently. So this international classification of diseases has been developed by World Health Organization, and it is mainly based on healthcare practices to be diagnosed through modern biomedicine. So it provides critical knowledge on the extent, causes, and consequences of human diseases and the death worldwide. So basically, it acts as um, the it acts as the clinical terms which are used in the recording of death certificates. So whenever a person dies, what what was the cause of that death and what type of disease was there. So this international classification of diseases helps in that context. So in India, from India, Central Bureau of Health Intelligence is an agency under Ministry of Health and Family Welfare which serves as the collaboration center for ICD related activities. So the new module has been signed between Ministry of Ayush and World Health Organization, and it has been developed as the code for Ayurveda, Siddha, and Unani medicine through the Namaste portal. Okay. So the next topic is prasadam. This topic is important for your art and culture section. So Union Minister for Health and Family Welfare has recently inaugurated country's first healthy and hygienic food street, prasadam, at Ujjain Mahakal Temple in Madhya Pradesh. So it is the first healthy and hygienic food street which will connect people in every corner of the country with pure and safe local and traditional food. It will provide culturally rich dining options for 1 to 1.5 lakh devotees who visit Mahakaleshwar temple daily. Mahakaleshwar temple is dedicated to Shiva, and it is situated beside the Rudra Sagar lake. And the Mahakaleshwar idol is Dakshinamukhi, which means that it faces south, unlike all other Jyotirlings. So it is spread over 5 levels, and it has images of Ganesh, Parvati, and Kartike installed in west, north, and east of the Sanctum Sanctorum. So the temple also houses a tank constructed in the Sarvato Bhadra style. So the next topic is Ugram. This topic is important for your security section. So DRDO has recently launched an indigenous assault rifle named Ugram, which means ferocious in Sanskrit. And Ugram is a state-of-art indigenous assault rifle, which has been built by DRDO in collaboration with a private industry partner. It has been developed as per the GSQR requirements. So it has a range of about 500 meters. It weighs just less than 4 kilograms. It has a 20 round magazine also, which fires robustly and in full auto mode also. So the next topic is Drishti 10 Starliner. This topic is again important for your security section. Chief of Naval Staff has flagged off the first indigenously manufactured Drishti 10 Starliner UAV for the Navy, which has been indigenously manufactured by Adani Defense and Aerospace. It has an advanced intelligence, surveillance, and reconnaissance capabilities. So it is an all-weather military platform which will have autonomous nature, and it would require minimal maintenance also. So it has increased operational readiness, reduced time downtime, and maximized deployment opportunities. So it has also advanced communication systems, including satellite communication and line of sight data links. Okay. So the next topic is INS Cabra. This topic is again important for your security section. So Indian warship INS Cabra, which is an indigenous fast attack craft, has been docked at Colombo port to bolster ties between India and Sri Lanka.
So INS Cabra is a naval vessel named after Andaman and Nicobar archipelago, which is an island of the Andaman and Nicobar archipelago. It belongs to the Car Nicobar class of high-speed offshore patrol vessels, which have been built by Reach shipbuilders and engineers for the Indian Navy. So these vessels are designed as cost-effective platform for patrol, anti-piracy and rescue operations in India's exclusive economic zone. And these class of vessels and are named after Indian islands, and they are the first water jet propelled vessels of the Indian Navy. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.